Manish Jha is also joining us live. Manish, लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि खर्ग आइलैंड पे इजरायली यूएस जॉइंट स्ट्राइक्स हुई हैं, पिक्चर्स निकलकर सामने आ रही हैं। क्या ये कहना सही होगा कि ये वॉर एक पेनल्टीमेट जगह पहुंच चुकी है जहां पर कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है जो इस वक्त ईरान नहीं छुएगा, जिस पर ईरान हमला नहीं करेगा, क्योंकि खर्ग आइलैंड पे अटैक हुआ है। 90% ईरान का ऑयल यहीं से जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त तेल अवीव में जब मैं हूं और यहाँ पर जो इजरायली स्टैब्लिशमेंट के लोग बता रहे हैं, उनका कहना है कि नेक्स्ट 24 आवर काफी डिसाइसिव होगा। और इसका मतलब ये है कि एक तरफ जहां प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी एक डेडलाइन दी थी अमेरिकन टाइम के हिसाब से रात 8 बजे तक की, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका और इजराइल की तरफ से बहुत ही इंटेंसिव तरीके से खर्ग आइलैंड में अटैक किए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें कल से भी आनी शुरू हुई थी और आज ज्यादा तस्वीरें आ रही है, बल्कि अब से कुछ ही मिनट पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, उस पर उन्होंने इस इजरायली स्ट्राइक को लेकर कुछ वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि हम ईरान को क्रश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कल जबकि इस वॉर के 40 दिन पूरे होंगे, इससे पहले ईरान पर और खास करके खर्ग आइलैंड पर जिस तरह से स्ट्राइक की जा रही है, इससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि जब अमेरिका के ट्रूप्स ग्राउंड पर उतरेंगे और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा, उससे ठीक पहले वहां पर उसी तरह की बॉम्बिंग की जा रही है जिस तरह की बॉम्बिंग का तरीका इजराइल का गाजा में या लेबनान में रहा है, कि इतनी बॉम्बिंग कर दो कि उसके बाद जब ग्राउंड ट्रूप्स जाए तो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस ना देखने को मिले। लेकिन उससे पहले उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर खर्ग आइलैंड को पर स्ट्राइक करने का मतलब यह है कि ईरान के पास अगले कुछ घंटे की मोहलत है कि आप या तो डील को हरी झंडी दें, नहीं तो फिर आप तैयार रहें और अधिक तबाही के लिए। और इसमें सबसे पहले खर्ग आइलैंड को मिटाने की, जिसके लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्रश वर्ड का यूज किया कि क्रश कर देने की बात कही जा रही है। अब देखिए, इसका ये बात सही है कि जैसा अभी कार्तिकेय भी कह रहे थे कि ईरान रिटेलिएट करेगा और कर भी रहा है। अभी से 15 मिनट पहले तेल अवीव में हमले हुए हैं, 2 घंटे पहले तेल अवीव में हमले किए थे। लेकिन ईरान ज्यादा फोकस करेगा अपने पड़ोस में अरब मुल्कों पर, जो उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पर अटैक करने के लिए। लेकिन ये भी बात सही है कि अब अमेरिका और इजराइल दोनों ने ये मन बना लिया है कि ईरान के ऑयल फैसिलिटीज पर, खासकर खर्ग आइलैंड में मैसिव अटैक करने हैं। और वो मैसिव अटैक अगले नेक्स्ट 24 आवर में आपको दिखाई देगा और उसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि फिर शायद खर्ग आइलैंड में जो आज दिख रहा है आपको, जिसको आप कहते हैं कि वो ईरान का ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज की जगह है, शायद उस समय वो खंडहर में तब्दील होता दिखे और वो अगले 1-2 दिन में आपको दिखाई देने वाला है। जी बिल्कुल मनीष, it's fair to say that the war is now entering a decisive phase. 40 days since the war started. As of tomorrow, what we do know now is in latest round of strikes, Kharg Island, which is a very crucial place for Iran's capability to supply oil to the world, has now been attacked. An attack was promised by Donald Trump, over the course of last 1 week. In fact, the rhetoric has escalated now in the last 24 hours. Iran was told that it will be decimated if it does not comply with the deadline that ends about 5:30 p.m. Indian time and 8 p.m. Eastern time this evening. Hours before that deadline were to end, Kharg Island has been attacked. Manish, एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो खत्म कर देंगे, ईरान को डेसिमेट कर देंगे, उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेंगे, ब्रिजेस पर हमला करेंगे, पावर प्लांट पे हमला करेंगे, जो कि होना शुरू हो चुका है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, वो हमारे यहाँ हिंदी में हम कहते हैं ना कि डंडे के जोर पर बात मनवाना। तो प्रेसिडेंट ट्रंप उसी के तहत ये डील करना चाह रहे थे, जब वो ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं और आखिरी मोमेंट में भी वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से एक एग्जिट रूट के तौर पर एक डील हाथ में आ जाए। और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले, जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी कि हमें लग रहा था कि डील होगी, लेकिन जब डील के लिए उन्होंने मना कर दिया तो मैंने कहा अच्छा रुको, अभी बताते हैं, उनको बोल दो 15 मिनट बाद वो अपने खिड़की खोल कर देखे कि बाहर क्या हो रहा है। और उसके बाद ईरान के जो सबसे बड़े ब्रिज के तौर पर कराज ब्रिज को जाना जाता है, उस पर एयर स्ट्राइक की गई थी। और मतलब कहने का मतलब था कि डील नहीं हुई तो 15 मिनट के भीतर उन्होंने कराज ब्रिज पर अटैक किया था। अब बारी आ रही है खर्ग आइलैंड की, कि खर्ग आइलैंड में ठीक उसी तरह से ये स्ट्राइक की जा रही है। डेडलाइन खत्म होने से कुछ घंटे पहले से ही ये स्ट्राइक शुरू हो गई है। इजराइल तो यही चाहता ही था। देखिए, इजराइल नहीं चाहता है कि इस वक्त ये युद्ध रुके। इजराइल चाहता है कि उसके जो अपने स्ट्रेटेजिक टारगेट हैं
वो अचीव हो जाए, उसके बाद युद्ध रुके। और इसके लिए लगातार इजराइल के प्रधानमंत्री यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये ऐलान करते कि हम खर्ग आइलैंड पर अटैक कर रहे हैं, उससे पहले ही इजराइल ने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। कल भी इजराइल की तरफ से इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये कहा कि हमने ईरान के सबसे बड़े जो पेट्रोकेमिकल्स कंपाउंड है, साउथ फार्स पेट्रोकेमिकल्स फैसिलिटी, उस पर हमने स्ट्राइक किया और उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जो ईरान में 50% ऑयल सप्लाई करता था। और अब खर्ग आइलैंड में जो स्ट्राइक के वीडियो सामने आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ये स्ट्राइक शुरू हो गई है। और इसीलिए हम अपने दर्शकों को ये कह सकते हैं कि इजराइल में यहाँ पर सरकार और इस्टेब्लिशमेंट के लोग कह रहे हैं कि बस देखते जाइए अगले 24 घंटे में क्या होता है। तो देखना होगा इस 24 घंटे में ईरान को कितना ज्यादा डैमेज करने की कोशिश की। बिल्कुल मनीष, ईरान को कंप्लीटली डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। ऑल्सो जॉइनिंग अस ऑन द शो इज एम्बेसडर मंजू सेठ, फॉर्मर इंडियन डिप्लोमैट। एम्बेसडर, व्हाट आर यू मेकिंग ऑफ द लेटेस्ट राउंड्स ऑफ अटैक? This time it's Kharg Island. The war is entering a decisive phase at this juncture. Donald Trump gave a deadline of 8 p.m. Eastern time. The deadline is approaching in just an hour from now. But we are looking at, attacks on oil infrastructure, something that the US has avoided so far. Would it be fair to say that the war has now gone up on the escalatory ladder? Absolutely. It is absolutely on the escalatory ladder. And as always, I think President Trump does change his mind very quickly, and this attack on Kharg Island is, of course, I believe, slightly, a pressure tactic, that this is what we can do, and, how we can, you better listen to us, but, it is extremely, I think, unfortunate that oil, it's going to impact the global economy, not only and energy of all the entire world almost. But I think this escalatory step by the Trump administration and by Israel together, I think is I don't know where we are headed really, because it's a very, very, very volatile situation, and it's only going to add more, give Iran more, I think. Right. Ambassador, stay with us. Breaking news coming in on the show. Railway bridges have been targeted by US-led forces in Iran. All right. So as the deadline approach, more news coming in of the bombardment that Iran is under. Railway bridges have now been targeted by US-led forces. Minutes after we heard of strikes on Kharg Island, the railway bridges in Iran have now been targeted by US and Israel, something that Israel had already warned of, Ambassador. Israel had said very categorically, told the Iranian people to stay away from railway lines, not go close to, railway track, because that would be the next target. It's clear at this point in time that civilian infrastructure is under attack. Yes, civilian infrastructure has all been. Ambassador? All right, we'll try and get Ambassador back, but as the war escalates there, minutes after we heard of Kharg Island being bombed, we now know that railway bridge in Iran has now been targeted by joint US-Israeli forces. In fact, this is what Israel had warned just a couple of hours ago through a tweet directed at Iranian people, asking them to stay away from railway networks, suggesting that they could be targeted next. Remember, in an hour from now, that crucial deadline will end, and Iran is bracing for impact. Ambassador is back with us. Ambassador Manju Seth, yes, ma'am. Multiple strikes there being reported on railway infrastructure. In fact, one power plant has been affected, has been impacted. Kharg Island has been impacted. We are now looking at this war escalating, ma'am, to railway, to public infrastructure, to, everything that connects to the people, to civilian infra. Absolutely. It is extremely unfortunate what is happening. And yes, they've made good their threats. They were threatening to, obliterate Iran literally, and they've started doing that already in, the civilian infrastructure and bridges and on Kharg Island. I mean, everything is being attacked now, and I don't know where we are headed. It's a really volatile situation and not a happy situation at all. And I think President Trump and Israel have, I think, all rules, you've seen all international law, international rules have already been thrown aside. And with this thing, it is again very clear that they don't much, respect
being Get you back on a better line. Iran is also now saying that the restraint is over. This is the war entering its 40th day and also perhaps entering a decisive phase right now. Civilian infrastructure is on the radar, it's on the target, and Ambassador Manju said, suggesting that US has made good on its threat. The threat to attack civilian infrastructure. In fact, Iran's Revolutionary Guard has warned neighboring nations the strategy going forward would be to build immense pressure on the neighboring nation. What will it mean for West Asia? Where does West Asia war head from here? We will, of course, be keeping a close watch, but the latest emerging is that a railway bridge has now been targeted by US-led forces. My colleague Manish Jha continues to be with us. Manish, पहले खर्ग आइलैंड फिर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा लग रहा है कि बोथ यूएस इजरायली फोर्सेस सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना शुरू कर चुके हैं. डेडलाइन खत्म ही होने वाली थी कि इससे पहले अटैक होना शुरू हो गए. बिल्कुल, जैसा कि हम और आप बात कर रहे थे कि ये दरअसल एक तरीका है ताकि ईरान को दबाव में रखा जाए और डंडे के जोन में आप उससे डील के लिए हाँ करवाई जाए. लेकिन ईरान इसके लिए तैयार हो नहीं रहा है और चूंकि वो तैयार नहीं हो रहा है तो ईरान को डराने के लिए, धमकाने के लिए या मनाने के लिए आप कह सकती हैं कि अमेरिका और इजराइल दोनों की तरफ से डेडलाइन खत्म होने से कुछ घंटे पहले से ही सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किए जा रहे हैं ताकि उनको ये कहा जा सके कि देखिए हम ब्लफ नहीं कर रहे हैं, हम सच में आपके ब्रिज को अटैक करेंगे, हम आपके रेलवे लाइन को अटैक करेंगे, हम आपके पावर प्लांट को अटैक करेंगे, कल की हम आपके वाटर प्लांट को अटैक करेंगे ताकि कल के दिन में आपके घर में ना पानी आएगा, ना बिजली आएगी, ना ही आप सड़क पर जा सकेंगे, ना ही आप ट्रेन रूट का इस्तेमाल कर सकेंगे और पूरी तरह से जो है सो ईरान ठप पड़ जाएगा. ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू दोनों की तरफ से ये बात करने की कोशिश की जा रही है ईरान को. हाँ, ये अलग बात है कि इसको लेकर अमेरिका में एक अलग किस्म का आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जहां पर कि अमेरिका के रक्षा मंत्री के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की कुछ डेमोक्रेट लीडर्स ने घोषणा भी की है. लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या नेतन्याहू गवर्नमेंट दोनों में से कोई इस तरह के प्रेशर में आने वाली है. वो अपने स्ट्राइक को कंटिन्यू करेगा और फिर वही बात है कि 40 दिन होते होते ये बात सही है कि ईरान जिस तरीके से अभी लड़ रहा है दुनिया भर में, इसके लिए बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है ईरान को, लेकिन इसकी कीमत ईरान चुका रहा है. आप सोचिए कि इस 40 दिन के दरमियान 15,000 से अधिक बार स्ट्राइक की गई है, जिसमें से दर्जनों बम ऐसे हैं जो 30,000 पाउंड से ज्यादा के बम है. तो आप समझ सकते हैं कि उसका असर किस तरीके से ईरान पर, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान के मिलिट्री एसेट्स पर पड़ा. बिल्कुल, देयर हैज बीन अ लॉन्ग standing impact on Iran's infrastructure. In fact, Iran, in the peace proposal that it sent out to the US, also mentioned it doesn't want reparations, but it wants to rebuild. And the only way it rebuilds is when it starts charging about $2 million for every ship it allows through the Strait of Hormuz. That's what Iran suggested in its peace proposal. That was a clause that perhaps US will never agree to, but at the same time, this has led to peace process breaking down, if there was any. In fact, there were conversations and reports that in view of a potential peace prospect, if there were to be conversations, US would hold on before striking, but it has now started striking. We'll have more guests joining us on the show very, very closely. All right, we do have Major General Rajan Kocha joining us. Major General, what are you making of the latest strikes? We are looking at Kharg Island under attack. We are looking at railway infrastructure under attack. US making good of its threat. Now what happens that the possibilities of the talks are receding by the day, and there is not likelihood of an agreement between the US and Iran, I think, is receding. So Donald Trump is trying to create a situation in which he brings a lot of destruction on Iran, and maybe he compels Iran to accept his conditions, which also seem unlikely. Second is Donald Trump is looking at exit policy as of now, because he has decided that after about maybe 2 weeks or so, he may like to exit on a high note. And his high note is that he wants to publicize to the world that he has totally
decimated Iran in all respects. That's how he's now targeting the... General Kocher, are you saying this is his exit strategy? That this would be the last round of attacks? Yes. Is this an exit strategy? Yeah. This is my reading of the situation, because Donald Trump, even if he continues to fight this attrition war, even for 6 months, is not going to achieve anything. And there is a lot of pressure from within the armed forces also, because if you remember, the chief of the army was asked to resign, and it starts affecting the morale of the other officers. I believe 6 generals have been asked to resign after this Hexeth has taken over. So now there is a question of morale. Second is the domestic audience in America is also, his ratings are going down by the day. You also know the primaries around the corner in November. So all these factors are playing onto the mind, and therefore I feel that he's not going to prolong his agony any longer. Okay. Also joining us is Air Commodore Ashminder Singh Bahel. Air Commodore, would you agree with that assessment, that this is perhaps the last leg of the war? Either it goes in favor of the US at this point, where they bomb Kharg, they bomb civilian infrastructure, and then they get out saying we have completely decimated Iran, or they stay on and they see through it that the Strait of Hormuz opens. See, one thing is very clear. I tend to agree with a lot of points that have been made by my co-panelists. But one thing I want to say, that Trump right now is in such a situation that he wants a big win. So big win, so that his popularity rating and approval rating that has fallen below 30%, now I believe 27% as of yesterday. So he needs something very big. And for that, he feels that if he can achieve either opening the Straits of Hormuz by force or by diplomacy on the sidelines, by using force in terms of hitting at the power plants or hitting at bridges, critical infrastructure, railway lines, and now like he started softening Kharg Island. Till the time he doesn't put boots on ground and he continues to attack the coastal infrastructure, the infrastructure at those 7 islands close to Straits of Hormuz, from Keshem Island right up to Abu Musa, and also the Kharg Island, if he's just softening it, if he's destroying the defenses, if he's destroying the retaliation capability of Iran, and thereby building pressure so that a decision can be reached, but is flexible enough that in case he has to make some deal with Iran, then he also has to give them certain things back. He can't have a maximalist stand and say Iran to surrender. That is not going to happen, even if Iran is destroyed to a large extent. So what we need right now is more flexibility from 2 people. One is Netanyahu and second is Trump. And since Trump knows that if he continues in this war, then not only will the Republican Party lose badly in both the houses, whether it's Congress or Senate, that in case the Democrats come back with a vengeance, then he will be likely to be impeached. In any case, people are talking of invoking the 25th Amendment as of this moment. Okay, in fact, more breaking news coming in. Stay with us, sir. We are given to understand that a petrochemical facility has now been hit by Iran. Iran is claiming it has hit a Saudi petrochemical facility. So Iran has now started bombing its neighbors yet again. This could largely be seen as an escalation of war after strikes on civilian infrastructure reported, including Kharg Island, which is the oil artery of Iran. Ambassador Veena Sikri is also with us on the show. Ambassador, looking at these developments, this is no more a military war. This is an economic war. This has consequences on global economy. It has consequences not just on West Asia, but consequences on India as well. The minute Kharg Island comes under attack, we now know that Indians are going to be in absence of, possibly better strategic reserves of oil, some essential needs that India has been struggling with, including sulfur, plastic, petrochemicals. We're looking at a situation deteriorating militarily in West Asia, but we're looking at economic losses for West Asian countries, including India. Yes, of course, this will have a very negative global impact on the economy of the world. As far as India is concerned, so far we have not been buying too much from Iran because of the sanctions, which have now been lifted. So, of course, we are in the process of negotiation. But I think the implication for the war itself, whether it's a step towards stopping the war or towards stepping it up,
That is the crucial question, whether this attack on Kharg is going to be a precursor that say, okay, we finished off Kharg, the economic lifeline is over. So does it mean that then America walks away? Or are they going to step it up, and then after the timeline which ends tonight or early tomorrow morning India time, then will they step this up with further boots on the ground? I think that boots on the ground by Americans seems to have been ruled out, especially with the change of the Army Chief General Randy George, because it's being said that it was he who opposed boots on the ground, and that his position is supported by many other generals in the army who are totally against putting American boots on the ground.